Bismillahirrahmanirrahim. I hope you all are fine, ladies and gentlemen. Yesterday, we began discussing life skills. Baba, please, mobile mics off करे छे. Mics off करे छे. Mics off करे छे. Turn your mic off. मुझे आवाज ॿुधण में अचे तो? Can you hear me? Yes, sir. Can you hear me? सर तव्हांजो आवाज़ अचे पियो सर बिल्कुल वाज़े अचे पियो बंद करे छॾियो. क्लास कल पाण वरितोसीं. we discussed, we communicated you. उन में मां ॿिनि स्टूडेंट्स सां क्लास जा ज़रूर उन्हनि खे यादि करणु चाहींदुसि जो उन्हनि खे ॾाढो हुयो शौक़ु. रोज़ मूंखे चवंदा सर महिरबानी करे क्लास वठो ऐं मूं चयो ठीकु आहे क्लास वठंदासीं, को मसइलो ई कोन्हे को. उन में शारिक ऐं अज़ीम खे जेको आहे मां ज़रूरु यादि कंदुसि. सभु मुंहिंजा प्यारा आहियो, सभु मुंहिंजा पंहिंजा स्टूडेंट्स आहियो. ऑल आर इक्वल टू मी. पर ही जेको सेशन जेको थिए थो सॼे माहौल ठाहिण में, इन्हनि खे अरेंज करण में ऐं ख़ासि करे जेको आहे इन्हनि जेको आहे ॿिन्ही ॾाढो किरदारु अदा कयो आहे. दे हैव बीन वर्किंग. They basically connected you and me. They approached me. They requested me to conduct Zoom classes. Otherwise, I was working on LMS. I posted my videos on my YouTube channel. I posted the same videos on LMS and sent you some notes. But Sharik and Azim approached me, said me, "Ke sir, kindly spare some time and conduct our class on Zoom technology. Zoom sessions should be done." I said, "Okay, gentlemen. If your mood is there, if you are working, जेकर तव्हां पंहिंजे पाण में दोस्तनि खां कोऑर्डिनेट कयो था, दैट्स गुड. वी स्टार्टेड. हिकिड़ी ॻाल्हि आहे. ॿी ॻाल्हि आई मस्ट उस्ताद आहिनि हुनखे सॼी ख़बर पवंदी आहे. कल्ह हिकिड़े तव्हांजे क्लास जे मां आउटसाइडर माण्हू हिकिड़े क्लास वरितो आहे. उनखे सॼी इंफॉर्मेशन आहे. उनखे कंहिं पासवर्ड ॾिनो, उनखे कंहिं ID ॾिनी, उहो कहिड़े पर्पस सां आयो, मूंखे A to Z ख़बर आहे. आई हैव इन्वेस्टिगेटेड कंप्लीटली. तव्हांखे गुज़ारिश थी कजे, नो आउटसाइडर शुड बी गिवन स्पेस. ही तव्हांजो पर्सनल क्लास आहे. क्लास रूम हूंदो आहे फिजिकल, हुन में कोई इजाज़त वठी ईंदो आहे, ठीकु आहे. दिस इज योर पर्सनल क्लास. नोबडी इज अलाउड आउटसाइडर. कल्ह नवां हुयो, पहिरियों ॾींहुं तव्हांजो. आई फॉरगिव यू. मां छॾे थो ॾियां तव्हांखे, पर नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन इट. यू आर माय ब्रदर्स. You all are my students. Even the girls are respected. We have a lot of respect for those girls who are studious, who are working daily. We have a lot of honor for all these students. So nobody from outside of your class should be given space. Only class participants are advised to conduct class, to attend class. Clear? ठीक है, मुझे गाल समझ में अचे थी? Hello? सिर्फ तव्हांजे क्लास वारा आहिनि. nobody from outside is allowed to be participant here through online session. ठीक है? Yes, sir. हाँ, मूंखे सॼी ख़बर आहे. मां ये कंप्लीटली इन्वेस्टिगेटेड. केरु माण्हू आहे, कीअं पहुतो, छा आहे, उनजे कहिड़ो नाले ते छा लिखियलु हो, सॼी ख़बर पई आहे. ठीकु आहे. हाणे तव्हांखे जेको आहे न करणु खपे. बसि मुंहिंजा लफ़्ज़ तव्हांजे लाइ काफ़ी आहिनि. No one should come from outside. This is for your class, personal class. Okay? Nelson Mandela 27 साल जेल में रहो. He was jailed for 27 years of life. When the time of the release came, police said him, "Mr. Mandela, we are going to release you, and your punishment is complete." He said, "Do not release me here. मुझे हिते आजाद न क्यों, मुझे यहाँ पर रिलीज मत करें. जहाँ से आपने मुझे अरेस्ट किया था, मुझे वहीं से रिलीज करें." नेल्सन मंडेला
27 साल जेल में रहण खां पोइ ॿाहिरि आयो, पंहिंजे आज़ादी खां पहिरियां पंहिंजे कारकुननि खे सदाईं, पंहिंजे पार्टी वारनि खे सदाईं उन्हनि खे चयईं त वञो जलसे गाह जी अरेंजमेंट कयो, जलसे ठाहियो, अरेंज कयो, इनवाइट पीपल टू कम टू लिसन मी, आई एम कमिंग टू मेक अ स्पीच आफ्टर 27 years of life. 27 साल इंसान की जवानी की उम्र आहे. He went there, माण्हू आया ऐं जलसे जो अरेंजमेंट कयनि. नेल्सन मंडेला पंहिंजी स्पीच शुरू करण सां चयो त मां पंहिंजी स्पीच उतां शुरू कयां थो जितां मूं 27 साल पहिरियां अधु में छॾी हुई. मतां तव्हां ईअं सम्झो त तव्हां नेल्सन मंडेला खां विसरी विया. मां पंहिंजो टॉपिक उतां शुरू कयां थो जितां मूं कल्ह खां छॾियो. Writing skills, again writing skills, but here today we are working on paragraph writing. First of all, we gave you the foundation. I told you that reading is the foundation of your writing. Today, we connect our last class with the present class, and it is paragraph writing. There are students. Ada mics band kare chadiyo. Please, mics band kare chadiyo. All boys and girls are advised to turn your mics off. Just listen me. I'm working on you. I'm working for you. Okay. Paragraph writing. What is a paragraph? What is the structure of a paragraph? Baba, mics band kare chalo beta. अच्छा, मूंखे चैट में मैसेजेस अचनि था त असां क्लास न वठी सघिया आहियूं. जेके क्लास न वठी सघिया आहिनि को मसइलो कोन्हे को. मां कल सॼो क्लास जेको आहे पंहिंजे यूट्यूब चैनल ते पोस्ट करे छॾियो आहे. उते वञो, उते ॾिसो सॼो जेको क्लास ज़ूम वारो थियो. आई हैव पोस्टेड इट ऑन माय यूट्यूब चैनल. उते वञो, तव्हां सर्च करायो, उते उहो क्लास पियो आहे. तव्हां आराम सां ॾिसी सघो. डोंट वरी, नो नीड टू गेट वरीड. ठीकु आहे. पैराग्राफ राइटिंग. शुरू क्यों? Okay, I hope you are with me. What is a paragraph? Paragraph is basically, paragraph is a series of sentences combined together to convey a significant idea. A paragraph is a series of sentences combined together to convey a powerful, great, significant and clear thought. Writing skills begin with sentences. A single sentence generates ideas. A collection of sentences makes the body of a paragraph. Is different. A collection of words. A collection of words gives proper meaning, proper sense is called a sentence. And a collection of meaningful sentences which are combined together, which are joined together, give a clear meaning, idea, subject or concept. This is called paragraph. So paragraph आवाज नथी अचे. कंहिंखे आवाज नथो अचे त तव्हांखे आवाज अचे थो? जी सर. फराज, तबीयत सही आहे? तव्हांखे अचे थो बाबा आवाज? जी सर, बिल्कुल आवाज है, साफ अचे थो. बिल्कुल अचे थो हाणे आवाज? पंहिंजो माइक सही कयो. छोकरनि जो आवाज गोड़ थो करे. तव्हां पंहिंजो माइक बंदि कयो. माइक बंदि करे छॾियो बाबा सभई. मुंहिंजो आवाज अचे थो? मुंहिंजो आवाज अचे थो बाबा? मुंहिंजो आवाज अचे थो तव्हां ताईं?
जी सर बिल्कुल अच्छे को सर। ओके ओके प्लीज। माइक बंद कयो तो मां ॻाल्हायां न, मां कीअं ॻाल्हायां? तव्हां पंहिंजो माइक्स बंद करे छॾियो त मुंहिंजो आवाज़ तव्हांखे क्लियर ईंदो न। ठीक है। पैराग्राफ जो मुख्तलिफ पैराग्राफ मुख्तलिफ डेफिनेशंस आहिनि, जेतिरा माण्हू दुनिया में मौजूद आहिनि ओतिरियूं डेफिनेशंस आहिनि शयुनि जूं। मां हिकिड़ी डेफिनेशन थो ॿुधायां, तव्हां ॿी पढ़ी हूंदी, टी पढ़ी हूंदी, को मसइलो कोन्हे, जेका क्लियर कॉन्सेप्ट वारी डेफिनेशन हुजे उहा पढ़ी छॾियो तव्हां। अरे ॿार खे चुप करायो। ॿार तव्हांजो, मुंहिंजो कोन्हे को। I'm alone here. Okay? तव्हां ॻाल्हाइण जे बदिरां जेकॾहिं सिखण खे टाइम ॾींदो त पंहिंजो जेको सेशन आहे उहो सुठो थींदो। If you focus on learning rather than talking, that could get you more ideas. ठीक है? A paragraph is based on 3 portions. Number 1, topic sentence. Number 2, supporting details. Number 3, concluding sentence. A paragraph is based on 3 points, 3 elements, 3 pillars. Number 1, topic sentence. Second, supporting details. And third is concluding sentence. What is topic sentence? Topic sentence is basically an introductory sentence of the paragraph. A topic sentence is called introductory sentence of the paragraph. It usually comes in the beginning, but sometimes it also comes in the middle. जेको टॉपिक सेंटेंस आहे उहो असांखे टॉपिक जो उनवान ॿुधाईंदो आहे त टॉपिक कहिड़े मौज़ू जे बारे में आहे, टॉपिक छाजे बारे में आहे, कीअं आहे। अक्सर करे टॉपिक सेंटेंस कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, पर किथे किथे विच में बि ईंदो आहे। This is called topic sentence. Through topic sentence, we come to understand what type of topic is being done or discussed. Then comes supporting details. Supporting details जो मकसद आहे टॉपिक सेंटेंस खां पोइ जेके ॿिया जुमला अचनि था, जेका छा अचे थी। अदा माइक्स बंद करे छॾियो प्लीज। हेलो, सर तव्हां सभिनी जो माइक बंदि। I have muted you all. ठीक है, तो हाणे मां हितां बंद करे छॾियो तव्हां सभिनी खे। ठीक है, we are talking about supporting details. Supporting details are also called supporting sentences. Listen, topic sentence is the sentence, it is the main sentence, chief sentence, prime sentence of a paragraph. After topic sentence, supporting sentences, supporting details connect topic sentence and concluding sentence. Pakistan is a country located in Asia. Pakistan is a country located in Asia.
This is first sentence. Pakistan is a country located in Asia. The Prime Minister of Pakistan is Imran Khan. Pakistan के आने जो पहले जो sentence आ वो topic sentence है. Pakistan is located or Pakistan is situated in Asia. This is called topic sentence. It has 4 provinces, namely Sindh, Punjab, Balochistan, and KP. Pakistan came into existence in 1947. Imran Khan is the Prime Minister of Pakistan. Before Imran Khan, Nawaz Sharif, Mian Mohammad Nawaz Sharif served as Prime Minister of Pakistan. Before Nawaz Sharif, clear? Yusuf Raza Gilani worked as Prime Minister. हाणे जेके जुमला मां ॻाल्हाईंदो वञा लाइव, हाणे इहे छा आहिनि, पहिरें सेंटेंस खां पोइ जेके ॿिया जुमला अचनि था इहे सपोर्टिंग सेंटेंसेस आहिनि. These are working as supporting sentence between topic sentence and concluding session. Zaruri, a paragraph may be of 5 lines, a paragraph may be of 7 lines, a paragraph may be of 10 lines, a paragraph may be of 12 lines. It depends upon your skill and art of writing. What is the idea of concluding sentence? A concluding sentence gives you a meaningful ending, a powerful thought that how to end your sentence. It may be called as the last sentence of the paragraph that completes the ideas. So, ladies and gentlemen, as far as writing skills are concerned, writing begins with a sentence. Life is beautiful. Let's enjoy it. Every day. हाणे ॻाल्हि ॿुधो, कल्ह वारी शइ खे मां कनेक्ट थो कयां. सभ खां पहिरियों छा आहे, हाणे मूं वटि पेन आहे, ठीकु आहे, ही पेन आहे, मुंहिंजे ज़हन में शयूं अचनि थियूं. ॿुधो ॻाल्हि, मां तव्हांखे प्रैक्टिस कल्ह वारी ॿुधायां थो. मुंहिंजे ज़हन में आई एम टॉकिंग टू यू, मुंहिंजे हथ में पेन आहे, सी आई पेपर सी हियर. जेका शइ मुंहिंजे ज़हन में अचे थी मां लिखंदो थो हलां. आई एम सिटिंग हियर in Khairpur. I am communicating with the students of K. Zulfikar Ali Bhutto School of Law Part 1. हाणे जेको मां ॻाल्हाईंदो थो हलां, जॾहिं तव्हां लिखंदो इहे थींदी तव्हांजी प्री राइटिंग आर फ्री राइटिंग. छा थींदी? प्री राइटिंग आर फ्री राइटिंग. जीअं डिस्कस कंदा हलो, लिखंदा हलंदो, उन खां पोइ ड्राफ्टिंग ईंदी. हाणे इहे जेकी मूं सेंटेंस लिखिया, कंहिंमें को थॉट टुटल हूंदो, a sentence may be broken, a sentence may be complete. हाणे इनखे तव्हां छा कंदो? You will arrange them in a readable manner. You will arrange their setting. उनखे असां चवंदासीं ड्राफ्टिंग. ड्राफ्टिंग खां पोइ comes revising. In the portion of revising, in the part of revising, in the section of revising, we add some new sentences and remove something. जेकर समझूं था त शइ कम जी न आहे, उनखे रिमूव कंदासीं. We will incorporate माना शामिल करणु. We will add something, we will include something. Revising खां पोइ छा ईंदो? Editing. Editing, in the process of editing, we check grammatical mistakes, we check spelling errors, punctuation, sentence structure, etc. उन्हें खां publishing वारो portion. हाणे now what is paragraph? Paragraph is basically a component of writing. Different sentences make a paragraph and different set of paragraphs make an essay. A paragraph is a collection of suitable, meaningful sentences which conveys, which gives, which transfers, which presents, which depicts, which illustrates a nice
meaningful idea, theme. A paragraph may be about science, technology, digital age, coronavirus, school of law, Benazir Bhutto Sahiba, Imran Khan, cricket, fashion, logic, magic, music, poetry, literature, life, love, friendship, river, nature, many topics can be included. So, a paragraph has three portions. Number one is topic sentence, means the chief sentence. It tells us about the introduction of the topic. It introduces the topic. Then comes supporting details or supporting sentences. Topic sentence का वो supporting details से क्यों? They will give us meaningful ideas, clear ideas about paragraph. Then comes concluding sentence. It is the last sentence of the paragraph. Clear? So paragraph writing ने कीअं थींदो? तव्हां लिखंदो, लिखण शुरू कयो. We write to convey our thoughts publicly. We write to tell people what lies in the bottom of our mind. We start writing to tell people that how beautiful our mind and thinking is. So how to develop these things? They need to be practiced. You need to be mastered. ठीक है? इन जे हवाले सां को सवाल है तो पूछो. जंहिंखे को सवाल आहे तो मूंखां पुछे. तव्हां चैट में लिखंदा वञो, मूंखां पुछंदा वञो. If you have any question, you can ask me. कोई सवाल है तो you can ask me in chat form. Shoaib Aman Solanki is asking, gentlemen, we are talking about paragraph writing. Paragraph writing is the soul of essay. Writing paragraph requires preparation of mind. Paragraph is a collection of sentences, different sentences, and paragraph has three portions: topic sentence, supporting sentences or supporting details, and the concluding sentence. I'll post this whole video on my YouTube channel. Sir, what will be the difference between essay and paragraph? Raza is asking a question. Gentlemen, Raza, my dear brother, different sort of paragraphs make an essay, and all paragraphs have the same connection. Suppose you are reading an essay on Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and the essay is based on 10 paragraphs. Each paragraph will be connected with Jinnah Sahab. को पैराग्राफ हुन जी एजुकेशन जे बारे में हूंदो, को हुन जी पॉलिटिक्स जे बारे में हूंदो, को हुन जी बैरिस्टरशिप जे बारे में हूंदो, को हुन जी जेको आहे मुस्लिम जे बारे में हूंदो. अहिड़े तरीक़े सां a collection of different paragraphs linked with the same theme topic is called essay. Essay is a longer essay के पढ़ंदासीं पाण अॻिते हली करे. Today we are discussing paragraph. Azim Hassan Metlo, does topic sentence comes in the first line? Gentlemen, usually comes in the first sentence in the top beginning of this paragraph, but sometimes it also comes in the middle. Raza, all right, sir, thank you.
Sir, please give conclusions of the lecture. Raj Kumar. Gentlemen, I have already given. So, we were talking about paragraph writing. Paragraph writing is the main element of writing skills. We cannot progress in terms of writing until we master ourselves properly on writing paragraph. So, paragraph is the unit of writing. From paragraphs, we jump towards essay. First, I taught you writing skills. I taught you the basics of writing. Later on, we discussed paragraph. Paragraph is based on 3 points. Paragraph is based on 3 pillars: topic sentence, supporting sentences, and conclusion. So we will be giving you more information in the days to come. Sir, can you define practice in writing skills, Ms. Cosa Antonio? Ji Baba, Hazur. In every action of life, in every topic of life, we need practice. We cannot cook food until we have gone through the practice. Similarly, writing exercise. Keep on writing. लिखंदा रहो. रोज़ानो हिकिड़ो कोशिश करे छॾियो हिकिड़ो पेज लिखो. It may be based on 5 sentences, 10 sentences. रोज़ानो लिखो उनखे चेक कयो. ऑटोमेटिकली तव्हांखे इंप्रूवमेंट फील थींदी. कीअं हाणे तव्हां सवाल कीअं लिखण शुरू भाई लिखण शुरू कयो. सपोज कयो अॼु तव्हां जॾहिं शाम जो फारिग थियो कमकार मां तव्हां लिखो हाउ आई स्पेंड माई डे. असां लिखो कोसेन पुन्यो हिन लिखो हाउ आई स्पेंड माई डेज. तव्हां लिखियो आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आई डिड दिस आई उन खां पोइ मां हीअ किताब कयमि पढ़ियमि सरसन जो लेक्चर ॿुधमि सहेलियुनि सां फोन ते ॻाल्हायो. इहे जेको तव्हां लिखनि जेको आइडियाज़ तव्हांजा आहिनि उहे ट्रांसफर थींदा फ्रॉम माइंड टू पेपर. So keep on practicing. Sometimes you talk about experiences. को ज़िंदगी जो experience लिखी वठो पाण. If paragraph awareness say the same, I have already differentiated between the two. A paragraph is a part of an essay. Many paragraphs combined together meaningfully make an essay. Any other question? Sorry, I didn't know yesterday. Raza, you can go on my YouTube channel. I have posted the whole lecture. You can listen. It will give you interest. It will cover your things properly. Raza has asked a question, sir, would you mind to, I won't mind, you can ask me, because I believe in learning. I learn from students. I'm humble. I'm not proud even. I love my students. I respect my students. Sir, tell me that how we can identify the topic sentence. मुझे आदा topic sentence identify तॾहिं कंदो जॾहिं तव्हां का बि शइ पढ़ो. हाणे मिसाल तो तव्हां लेक्चर पूरो थिए असांजो क्लास उन खां पोइ तव्हां नेट ते का बि शइ पढ़ंदो उहा पैराग्राफ जी सूरत में हुजे ऐं तव्हां ॾिसंदो त टॉपिक जे बारे में को अहिड़ो सेंटेंस हूंदो जेको टॉपिक खे बयानु कंदो, जेको टॉपिक खे एक्सप्लेन कंदो, जेको टॉपिक खे ॾसींदो, टॉपिक जो तारीफ़ कराईंदो ऑडियंस खे असांखे. दैट इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस. Okay, any other question? Any other question?
Thank you so much. All right. Really proud of you. Thank you अदा खुश रहो अल्लाह सां इज़त दे तव्हांखे छोकिरियूं भले सवाल नथियूं पुछनि क्वेश्चन खां सवाइ को पुछनि बाबा को सवाल आहे टाइमिंग हाजरा any other student any other question फराज कादिर मैतलू रजा शहबाज जवान नूर हसन who is नूर हसन Hussein is Sir, asked the question difference between an idiom and proverb. Okay, these two are not linked with this class, but I define. A proverb is based on experience, knowledge, and wisdom. Clear? A proverb travels from one generation to another generation. An idiom is a unit of different words to give a different meaning. Misal tor, to break the ice. Break mana trodden, ice mana barf. To break the ice. And in के जॾहिं combine कंदासीं त इन जी meaning थी वेंदी ॻाल्हाइण शुरू करण ख़ामोशी टोड़ण. This is idiom. Knowledge is power. अदल से ये फरमाना knowledge is power. इल्म में ताकत है, इल्म में सघ है. ये जेको फरमान आहे या जेके असां चवणियूं ॿुधंदा आहियूं मिटनि माइटनि खां उहे these are called proverbs. A paragraph contains short word sentences. ॾिसो जेतिरा शॉर्ट सेंटेंस हूंदा क्लियर हुजे लॉन्ग सेंटेंस जे बदिरां शॉर्ट लिखो सां बहितर आहे क्लियर हुजे मीनिंगफुल हुजे ठीकु आहे थैंक यू वेरी मच अल्लाह तव्हांखे इज़त में इज़ाफ़ो करे ख़ुशि रहो क्लियर sir, जेतिरो टाइम तव्हां मोबाइल sir, फोन अधु जेतिरो ओतिरो पढ़णु करियो जी 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 जेकर राइटिंग भलने तो बेड राइटिंग ते केड़ा असर विझे मतलब बेड राइटिंग का वो राइटिंग स्किल्स ते केड़ा असर विझे थी सर अदा बेड राइटिंग ॾिसण में आहे न माना जेका राइटिंग तव्हां लिखो था ॾिसण में चङी न आहे इहो था चओ न तव्हां या लिखणु नथो अचे ॿई शयूं राइटिंग माना भई हिन जी लिखत सही न आहे अंग्रेजी में लिखे थो अखर सुठा न अथसि उन पस मंज़र में था पुछो या हाउ टू राइट उन पस मंज़र में था पुछो सर राइटिंग मतलब सही ना है अखर सही न था इन मकसद से मतलब केड़ो चवण जो मक़सदु आहे इहो त नेचुरल आहे जंहिंजा अखर सुठा आहिनि उहो माना अखर सुञाणप आहिनि शख़्सियत जी पर जेकॾहिं सुठा न आहिनि पूरा सारा आहिनि कमु हली वेंदो सुठा हुजनि त बहितर आहे मतलब मन सर चलो खास असर न था विझन मन राइटिंग स्किल्स ये राइटिंग राइटिंग स्किल विझनि था न माना तव्हांखे माण्हू हुन इंट्रस्ट सां और चॉइस सां न पढ़ंदा न ख़ासि करे बोर्ड में तव्हां इम्तिहान ॾेई आहियो फर्स्ट ईयर जो 9th 10th जो जिनजी राइटिंग सुठी हूंदी उन जूं मार्क्स तव्हां खां वधीक सुठियूं आयूं हूंदियूं ठीकु आहे स्टे ब्लेस्ड स्टे हैप्पी सी यू टुमारो और सी यू नेक्स्ट टाइम असां शेड्यूल कंदासीं हिकिड़े क्लास जो सर थैंक्स अ लॉट थैंक यू सो मच सर थैंक यू अदा खुश रहो मेहरबानी आई एम रिसीविंग फीडबैक स्टे ब्लेस्ड थैंक यू टेक केयर जी जी लास्ट पूछो जी ना